Hello everyone, this is Rabbia. In this video, we will solve question number 19 from exercise 3.2, chapter number 3. The area of the triangle is 8 square units. Two of its vertices are the points A, 1 minus 2 and B, 2, 3. And the third vertex C lies on the line 2x plus y minus 2 equals to 0. Find the coordinates of the vertex C. Let x, y be the coordinates of C. इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. अप्लाइंग फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. जब हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने होते हैं तो जो अननोन वर्टेक्स होता है उसको हम लेते हैं x1 y1 एंड देन हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. तो x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. एरिया हमारे पास गिवन है 8. हाफ ऑफ एक्स वाई 1, x2 क्या हो जाएगा 1, माइनस 2 1 एंड 2 3 1. ठीक है, ये एक्स वाई हमारे पास x1 y1 है. देन हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें x2 y2 की वैल्यूज़ यहाँ से पता चलेंगी एंड देन x3 y3 2 3. ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 16 इज इक्वल्स टू x इंटू minus 2 into 1 minus 2 minus 3 minus y 1 minus 2 plus 1 3 plus 4. 16 is equals to minus 5x plus y plus 7. 5x minus y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इसको कह दिया कॉलिक इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x. इसको कह दिया इक्वेशन 3. पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2. 5x minus y plus 9 equals to 0. 5x minus 2 minus 2x plus 9 equals to 0. 5x minus 2 plus 2x plus 9 is equals to 0. And ये हो गया 7x plus 7 is equals to 0. And x is equals to minus 1. Put the value in equation 3. Y is equals to 2 minus 2x and y is equals to 4. Therefore, the coordinates of C is minus 1, 4.